Next question. P Limited has expected return of 22% and standard deviation of 40%. तो P Limited का expected return दे रखा है और उसका standard deviation दे रखा है. Q Limited has expected return of 24% and standard deviation of 38%. P Limited has beta 0.86 and Q has beta 1.24. Correlation between the returns of the P and Q is 0.72. Standard deviation of the market portfolio is 20%. You are required to answer following simple questions. There are 3 questions provided to us. I want you to tell me answer for the first part of the question in the chat box. Dear students, question में ऐसा पूछा है, if you invest certain proportion in one security and certain proportion in another security, what is expected return from the portfolio? तो बहुत ही सिंपल है, हमको दोनों सिक्योरिटीज का रिटर्न दे रखा है, जो प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो प्रपोर्शन दे रखा है, उसके ऊपर से हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल वेटेड एवरेज फॉर्मूला. सो कैलकुलेशन ऑफ return of portfolio security weight or proportion in which investment is made, return weight into return. There are two securities P and Q. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से यू इन्वेस्ट 30% इन क्यू. यूजुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि हमको यहां पे जो सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन है ना वही सीक्वेंस में यहां पे भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, पर यहां पे ऐसा नहीं है. पहले क्यू का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, क्यू में हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे 30% और पी में ऑफकोर्स 70%. रिटर्न क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से पी में से हमको रिटर्न मिलेगा 22% का और क्यू में से रिटर्न मिलेगा हमको 24% का. सो 0.7 इंटू 22 that comes to 15.4. 0.3 into 24 that comes to 7.2. So overall it comes to 22.6. This is the way return of the portfolio can be calculated. Please take down answer. Next question. What is the market portfolio expected return and how much is the risk free rate? तो second part of the question में हमको ये पूछा है that say you're required to calculate what is the risk free rate of return and what is the return on the market portfolio. I request all of you to do answer for the question and put your answer in the chat box. Just I give a small hint to you that we don't have a choice but to make an assumption कि ये जो expected returns का information question में दे रखा है ये returns को हमें ऐसा ही मानना पड़ेगा that say these are required rate of return as per CAPM. Unless we make that assumption that say both of them are required rate of return as per CAPM, we cannot calculate the answer. तो हम लोग ऐसा assume करेंगे कि ये दोनों के दोनों required rate of return है और उसके basis से we will make the calculation of RF and RM. Try to do answer on your own. I request all of you to write down answer. Assuming that RF equals to X and RM minus RF equals to Y, comma,
आंसर इज कैलकुलेटेड। उसमें लिखो आगे, फर्दर we are assuming that the given expected returns are as per CAPM. Full stop. The written answer. Required rate of return is RF plus beta into RM minus RF. Required rate of return is X plus beta into Y. दो सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको, सिक्योरिटी P एंड सिक्योरिटी Q। सिक्योरिटी P का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 22%, और उसका बीटा हमको दे रखा है 0.86। सिक्योरिटी Y का हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 24%, और उसका बीटा हमको दे रखा है 1.24। So we are required to now cancel the common values to compute the answer। यानी क्या करेंगे, -22 माइनस एक्स माइनस 0.86y, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव x और नेगेटिव x एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। 24 minus 22 is 2, 1.22 minus 0.86 is 0.38y, y is equal to 2 divided by 0.38, that comes to 5.2631। so 5.26%। ये क्या आ जाएगा, RF माइनस RF। उसके ऊपर से क्या करेंगे, RF कैलकुलेट करेंगे और फिर RM कैलकुलेट करेंगे। So next is calculation of RF। Required rate of return is equal to X plus beta into Y। So X is required rate of return minus beta Y, तो ये कितना है 22, ये कितना है 0.86, और y का वैल्यू कितना है 5.26। so 0.86 into 5.26, 4.52, that is deducted from 22, so 17.48%। that is the way risk free rate of return is found। उसके बाद RM का कैलकुलेशन ऑफ RM, उसके लिए क्या किया जाएगा, y इज इक्वल टू RM माइनस RF। सो RM इज y प्लस RF, y का वैल्यू कितना है 5.26 प्लस RF का वैल्यू कितना है 17.48। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या x कैलकुलेट किया है, और x क्या है, x हमारे एग्जाम्पल में RF है। सो 5.26 प्लस 17.48, 22.74। That is the way return on the market portfolio can be found। Please write an answer। Third question, what is beta of portfolio if P's weight is 70% and Q's weight is 30%? I request you to write an answer for the third question in the chat box।
So dear students, beta of the portfolio is found as simple weighted average. It is weight of P into beta of B, weight of Q into beta of Q. P का वेट कितना दे रखा क्वेश्चन में? What is beta of the portfolio if P's weight is 70%? तो ये 0.70 है, and Q's weight is 30%, तो Q का वेट 0.30. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that the beta of P security is 0.86, and for Q security the beta is 1.24. So 0.7 into 0.86, 0.602. 0.3 into 1.24. 0.372 plus 0.602. So it is 0.974. That is the way beta of the portfolio is calculated as 0.9740. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा समरी पूरे आंसर का. पहले क्वेश्चन में पूछा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, अगेन सिंपल वेटेड एवरेज करके हमने आंसर कैलकुलेट किया. थोड़ा सा सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, पहले क्यू सिक्योरिटी का वेट दे रखा है, उसके बाद पी का वेट दे रखा है. उसके बाद पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आरएफ और आरएम. इसके लिए हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो रिटर्न्स हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो एज पर CAPM है, एंड अकॉर्डिंगली वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आरएफ एंड आरएम माइनस आरएफ, और उसके बाद हम लोग आरएम का कैलकुलेशन करते हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. और आखिरी में बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, अगेन सिंपल वेटेड एवरेज, दोनों सिक्योरिटीज में जो प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव बीटा.